Good afternoon, everyone. My name is Joel Joseph, and I'm an assistant editor at the Times of India, and I'm your host for this afternoon. And I warmly welcome the chief guest for this afternoon, Shri Dharmendra Pradhan ji. He's the Union Minister for Education, Skill Development, and Entrepreneurship. Also, our chief guests of honor, Sudha Raghunathan, Professor Govindan Rangarajan, and Rohan Verma, and Shantanu Moitra. The Times of India's Unstoppable 21 initiative celebrates the spirit of an unstoppable nation, a nation that is being taken to its rightful place in the world by its youth. The initiative was especially relevant given the fact that India's median age is under 28, of a nation which has a staggering 512 million people below 21 years of age, a figure that exceeds the total population of any country except China. In this context, on August 15th this year, the Times of India commenced Unstoppable 21, a hunt to identify and showcase 21 young Indians, all below 21 years of age, who have achieved success at the global stage. Today, we have an opportunity to present these achievers to you. To share more about this initiative, I would now request Kaustav Chatterjee, Director, the Times of India brand. Kaustav, kindly come on stage. Thank you. Thank you, Joseph, and good afternoon to all of you. On the behalf of the Times of India, we are delighted to welcome Shri Dharmendra Pradhan ji, Honorable Union Minister for Education and Skill Development and Entrepreneurship. Thank you for joining us today, sir. We are also honored to have in our midst Srimati Sudha Raghunathan, Professor Govindan Rangarajan, Mr. Rohan Verma, and Mr. Shantanu Moitra, all of whom have been a key part of this very special initiative of ours, Unstoppable 21. And a special welcome, of course, to all of the young talent and all of the students who are with us today. There's a special vibe and a special energy I can feel. I'll go back around 30 years. When we were kids, I remember singing Hum Ho Rahe Kamyaab ek din. Many of us, slightly older than me or slightly younger than me, may remember it. I don't know if it is still sung in school assemblies today. But this song has been a part of our Indian culture, our ethos, if I can call it that, although it came from Western sources, but we interpreted it in a very uniquely Indian way. This song was a heartfelt articulation of our individual and national aspirations at that time, when resources and opportunities were still a very big challenge vis-a-vis the developed world, unlike today. Since then, we have all collectively and individually, with rapid strides in every sphere, come a long way, whether it be science and technology, sports, industry or commerce, or our ever-expanding cultural and entertainment influence all across the world, as you very well know. Somewhere over the past few decades, the pace of this change, the pace of our progress and success, has acquired a massive momentum, which I can just sum up in one word. In fact, that's what we were thinking. How do we sum it up? One word: unstoppable. We at the Times of India realized this paradigm shift, that as a nation and as a people, we have gone from Hum Honge Kamyaab ek din to Hum Ho Rahe Kamyaab, dekh lo. Now, there is no better way to put the spotlight on this than to see what our young Indians are doing and achieving today. India is a young nation, as my colleague Joseph talked about. A staggering 512 million young Indians are poised on the verge of making Kalka India. It's already being made. And we started a hunt for those 21 young Indians under the age of 21 who would best epitomize the spirit of an unstoppable India, a young India on the move.
Our discerning editors sifted through hundreds of dossiers after thousands of nominations across the country, from every part of the country. And this was then taken through our eminent jury, some of whom are present right here. We thank our jury of very distinguished names who spared their time and effort to help arrive at the decision to select the final 21. I will take a moment to introduce all of them to you. Mr. Vishwanathan Anand, who needs no introduction. Mr. Nandan Nilekani, again a person whose achievement has not only been in the field of industry, but also in government. He's responsible for spearheading the Aadhaar system, the ecosystem. Mr. Chetan Bhagat, a noted author and columnist. Professor Govindan Rangarajan, the director, Indian Institute of Science. Mrs. Sangeeta Jindal, chairperson at JSW Foundation and prominent Indian business leader. Mrs. Sudha Raghunathan, a leading Carnatic music exponent. Mr. Rohan Verma, CEO of MapMy India. Ms. Shaheen Mistry, CEO of Teach for India. And Mr. Ankur Tiwari, music singer, writer, and composer. Thank you all. And today, we are truly proud to share the final 21 with you. We believe that each of these 21 success stories has the power to inspire millions of such success stories. When I read their profiles, when I read about the Chandrayaan mission turning out successful, landing our Vikram rover on the moon, when I read about, in our paper, the 107 medals that our athletes have won in the Asian, and such events that keep on happening with very frequent regularity nowadays than before, I think of the distance that we have collectively traveled from Hum Honge Kamyaab Ek Din to Hum Ho Rahe Kamyaab Dekh Lo. Acclaimed Bollywood music director Shantanu Moitro, who is here with us, has composed this music anthem that captures this very brilliantly, that we shall all see and hear shortly. Thank you. Thank you, Kaustav. I would request you to kindly remain on stage. I would now request and invite Divakar Asthana, the Executive Editor, Times of India, and Mr. Mohit Jain, Chief Operating Officer, BCCL, to kindly come on stage and invite. Can I ask both of you to kindly come on stage? And now I would like to invite the chief guest for this afternoon, Dharmendra Pradhan ji, to come on stage, please. Now I would request our chief guest to kindly share a few words of inspiration for all of us. नमस्कार। टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार की ओर से अनस्टॉपेबल 21 कार्यक्रम में उपस्थित टाइम्स ऑफ इंडिया की एग्जीक्यूटिव एडिटर मेरे बड़े भाई आदरणीय दिवाकर अस्थाना जी, कौस्तुभ चटर्जी जी, इस प्रोग्राम के अन्यतम अतिथि तथा इस सिलेक्शन प्रोसेस की जूरी आदरणीय गोविंद राजन जी, डायरेक्टर IISc बेंगलुरु,
श्रीमती सुधा रघुनाथन जी, प्रख्यात संगीत शास्त्री, शांतनु मैत्र जी, देश की एक जाने माने नाम संगीत की दुनिया के, सभी महानुभाव, सभी आज जिनको सम्मानित किया जाएगा, ऐसे सभी मित्रगण, आदरणीय मोहित जैन जी और अन्य साथीगण, मैं सबसे पहले आज टाइम्स ऑफ इंडिया को धन्यवाद देता हूं। 21 नए बच्चों को, युवा बच्चों लोगों को अनस्टॉपेबल 21, 21वीं सदी की 21 नए बच्चों को अनस्टॉपेबल 21 के नाम पे सम्मानित करने का आज एक प्रयास किया है। मैं सभी बच्चों को तथा टाइम्स ऑफ इंडिया को धन्यवाद देता हूं इस प्रोग्राम के लिए। जैसे थोड़ी देर पहले 21 की नंबर में 21 बच्चों की चरित्र के बारे में उल्लेख किया गया था। उसमें से 2 बच्चे 9 साल के थे। ये 9 साल एक विषय का प्रमाणित करता है। अभिमन्यु भी शायद इन्हीं आयु में अंदर घुस गया था चक्रव्यूह के। एकलव्य जो भारत की विद्यार्थियों की एक सिनोनिमस है, उनकी कोई टीचर नहीं थे उन दिनों में, टाइम्स ऑफ इंडिया भी नहीं था, उनको 21 ब्राइट स्टूडेंट में सिलेक्शन किया था। वो तो एक प्रकार से समाज की तिरस्कारी थे। तुम्हारी कैसे हिम्मत होगी इसे पढ़ने के लिए? ऐसे सामाजिक वर्गीकरण से आने वाला एकलव्य भी शायद 9-10 साल का होगा। हमारी भारतीय सभ्यता में, जिसके बारे में अभी कौस्तुभ जी बार बार उल्लेख कर रहे थे, हम अपने बचपन पे गाना सुन रहे थे, हम होंगे कामयाब। उस परंपरा के जो पहला पहला नाम होगा, कुछ नामों को आज की पीढ़ी के बच्चे पहली बार भी शायद सुनेंगे। आपने कभी किसी ने बाजी राउत का नाम नहीं सुना होगा, या जोरावर सिंह जी की नाम नहीं सुना होगा। सिख संप्रदाय में गुरुओं के बच्चे किस उम्र में शहादत दिए थे? गुलामी के सामने सर नहीं झुकाना, देश के लिए मर मिटना, जोरावर सिंह, फतेह सिंह से ही हम सीखते हैं, बाजी राउत जी से सीखते हैं। आप लोगों ने अभी अभी G20 में कोणार्क चक्र की चित्र देखा होगा। प्रधानमंत्री जी ने ग्लोबल लीडरशिप को उसके नीचे मिला। उस कोणार्क को बनाने वाले में इस 21 ग्रुप में से जैसे कोई एक लड़का था, धर्मपद। हमारी देश में और दुनिया में, हमारी देश केवल नहीं है, अभी संसद की नई भवन आई है। मैं अनुरोध करूंगा जिन लोगों ने इस कार्यक्रम को आयोजित किया है, कम से कम इन 21 बच्चों को संसद की नई भवन दिखा के लेके आए। और संसद की नई भवन में एक 21 साल का नीचे के बच्चे की फोटो है, मूर्ति है। उस मूर्ति में यह चरित्र किया गया है, मगध साम्राज्य में जब अन्याय अत्याचार के खिलाफ सत्ता परिवर्तन हुई, ऐसे ही एक छोटा सा बालक चंद्रगुप्त मौर्य ने, चाणक्य जैसे उनको कोई गुरु मिला, यानी उस समय में कोई उनको टाइम्स ऑफ इंडिया मिला। गुरु ही तो आज भी आपके हैंड होल्ड टाइम्स ऑफ इंडिया कर रहा है। तब चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को पकड़ा। उस चंद्रगुप्त मौर्य की मूर्ति के सामने नीचे लिखा गया है, मैं आने वाले दिनों में एक साम्राज्य बनाऊंगा। आपके भरोसे भारत की, जो गाने के एक दूसरी पक्ष के बारे में चर्चा किया,
हम हो गए कामयाब, देख लो। मैं थोड़े देख लो वाले शब्द से सहमत नहीं हूं। ये तो शुरुआत ही है। हम होंगे कामयाब इस आत्मविश्वास से भरने के लिए मैं आपको बधाई देता हूं, लेकिन देख लो कि समय बाकी है। 2047 में देश को विकसित भारत करा के ही गाएंगे देख लो। तब तो और मेहनत करना पड़ेगा। और मैं निस्संदेह आज जिस एक पेंटर की या एआई के जिन बच्चों की आज सम्मानित किया जा रहा है, उनको सम्मानित नहीं किया जा रहा है, उनको स्वीकृति दिया जा रहा है। सम्मान तो तब आप लाएंगे देश के लिए जब देश बड़ा हो जाएगा। बड़ा हो रहा है। इन दिनों में क्या क्या हुआ इस देश में, पिछले अगर कुछ महीने में हम देखें, हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आजादी के अमृत महोत्सव में एक घटना मेरे को याद दिलाती है। एक ग्रुप जो सामंतवादी थे, फ्यूडल थे, रेसिस्ट थे, उन्होंने कहा कि भारत के लोगों के रंग काले हैं, उनकी मेंटल डेवलपमेंट नहीं है अपने बारे में निर्णय करने के लिए। उन्होंने इसलिए 1835 में एक एजुकेशन सिस्टम लाया देश में, मैकोले मिनट्स उसको कहा जाता है। जिन लोगों ने हमको 250 साल शासन किया, उस देश में जब आजादी का अमृत हम महोत्सव बना रहे, एक भारतीय मूल की व्यक्ति प्रधानमंत्री बन गया। उतना नहीं, हम उसी साल हम हो गए कामयाब। कैसे? उनको पीछे छोड़ के, हम यूके को पीछे चढ़ के 5 नंबर की इकोनॉमी बने, यूके को पीछे छोड़ के। ये पिछले कुछ महीनों में हुए हैं। आज भारत में दुनिया की सबसे नया उद्यमियों का देश है, स्टार्टअप्स की, एंटरप्रेन्योर्स का। लगभग 1 लाख नया स्टार्टअप इकोसिस्टम हमारी देश में बन चुके हैं। कभी आपकी पीढ़ी के बच्चे कभी मैप माई इंडिया में पूछना वर्मा जी का, वो है कि नहीं है, नहीं तो गूगल में पूछना कि भारत 60 दशक में भारत की फूड सिक्योरिटी की क्या स्थिति थी। 60 के दशक में भारत में फूड स्कैरसिटी थी। कभी एक ने फेमस नारा आप लोगों ने सुना होगा, जय जवान जय किसान। किसने दिया था ये नारा? किसने दिया था? ये टीचर क्यों बताते हैं? बच्चे को बताने दो, तो हम कितना देखें, कितना हो गए हैं तैयार भी पता चलेगा ना। किसने दिया था वो नारा? क्यों दिया था वो नारा? किस बैकग्राउंड पे नारा दिया था? हमारी देश के साथ पड़ोसियों ने युद्ध कर दिया। देश में फूड ग्रेन की स्कैरसिटी हुई, तो देश के किसानों को शास्त्री जी ने आह्वान किया कि उत्पादन बढ़ाओ। उसकी पहले जो पुराने लोग होंगे या उन दिनों में जाके 90s, 50s, 60s की टाइम्स ऑफ इंडिया की पेज को पढ़ना थोड़ा आज जाके घर में, PL4 उस स्कीम को टाइप करना और पढ़ना क्या लिखा था उसमें। हमें खाद्यान्न नहीं था, हमें बाहर से खाद्यान्न को खरीदना पड़ा। कहां से हम खरीदे थे? हम अमेरिका से खरीदे थे। कोई मुफ्त में नहीं दिया था हमको किसी ने, हमको खाद्यान्न खरीदना पड़ा और अच्छे क्वालिटी के नहीं आए थे। वो दिन भी हम लोगों ने देखा, इस देश ने देखा। और आज क्या है? आज हमने 150 देशों को इस बार कोरोना में वैक्सीन भेजा और 40 देशों को मुफ्त में वैक्सीन भेजा। ये भारत की नई पहचान हो रही है। भारत एलिट क्लब में खुद को पहुंचाया जब प्रधानमंत्री जी ने कहा इंडिया इज ऑन मून। सोमनाथन जी ने कहा प्रधानमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी नाउ इंडिया इज ऑन मून। भारत की सामूहिक इच्छा शक्ति के कारण, साइंटिफिक विल पावर के कारण भारत की विक्रम और प्रज्ञान पहुंच गया। और आपने देखा होगा प्रज्ञान ने थोड़ा उछल कूद भी किया।
पहुंच के चला और थोड़ा एक बार उठने का भी कोशिश किया। ये इंडिकेशन क्या, साइंटिस्ट कहते हैं ये इंडिकेशन है, ये कभी आने वाले दिनों में चंद्रयान 4 में मिट्टी को लेके लौटेगा। ये भारत की साइंटिफिक टेम्पर की कैपेसिटी है। G20 की समिट हुई। G20 की समिट में जो चीज दुनिया ने हमको सोचा ही नहीं था, इसे हो गया। क्या सच में एक कॉन्सेंसस डॉक्यूमेंट, लीडरशिप डिक्लेरेशन हो पाएगा? हुआ। विश्व में अभी अभी जो घटना हो रहे हैं खाड़ी की देशों के अंदर, पैलेस्टाइन और इजराइल के अंदर, भारत की पोजीशन को देखिए। भारत को कोई बदलना नहीं पड़ रहा है। भारत की सोची समझी विदेश नीति दुनिया के द्वारा प्रशंसित हो रही है। ये भारत की नई पहचान है। उस G20 में कई सारा चीज हुए, लेकिन एक चित्र में नई पीढ़ी के सामने कह रहा हूं। कभी सोचिए, भारत की प्रधानमंत्री जी को अमेरिका में जाकर राष्ट्रपति जी को मिलने के लिए बाहर की रूम पे इंतजार करना पड़ रहा था। भारत के एक पुराने राजदूत कहें मेरे को, अभी अमेरिका में रहे हुए एक राजदूत कहें कि हम लोग पहले जब जाते थे अमेरिका में, बहुत पुराने नहीं, अभी 2-3 दशक पहले, हमें हमारी समतुल्य लोगों को छोड़ो 10 हायरार्की में 10 स्टेप छोटे लोगों को मिलना पड़ता था। और आज जाति के जनक पूज्य बापू जी की समाधि स्थल पे दूसरे दिन प्रधानमंत्री जी ठीक 1 महीना पहले 10 सितंबर को विश्व की सभी नेताओं को खाली पैर पे श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठा कर दिए। वो चित्र को थोड़ा कल्पना करिए। और अभी अभी अब उसमें दुनिया में और एक चीज हुआ। विश्व के गरीब देशों को, इमर्जिंग इकोनॉमी को प्रधानमंत्री जी ने बुलाया, कहा कि आपके बारे में भी हम चिंता करेंगे। और उनको G20 में ग्लोबल साउथ अफ्रीकन एसोसिएशन की लीडरशिप को परमानेंट मेंबर दिया, भारत ने दिलवाया। अभी अभी चाइना में एशियन गेम पूरा समाप्त हुआ है। कभी भारत में ऐसा नहीं हुआ था कि 107 मेडल भारतीय एथलीट्स ने जीत के लेके आया, देश की गौरव बढ़ाया। मित्रों, अगर उसको इन दिनों में और 1-2 घटना हो रहा है। देश में बेरोजगारी जो 2016-17 में 17-18 में एवरेज 6% होता था, वो आज घट के 3% में पहुंची है। इन्फ्लेशन स्टेबल है। मैं ये नहीं कहूंगा कि प्राइस राइज एकदम मध्यवर्गीय लोगों को दिक्कत नहीं दे रहा है। विश्व की स्थिति को थोड़ा समझिए। आधे विश्व एनर्जी क्राइसिस में है, आधे विश्व पॉलिटिकल क्राइसिस में है। इसके बाद भी भारत में मुद्रास्फीति नियंत्रित है, स्टेबल है। भारत में काम करने की लोगों की संख्या बढ़ रही है। भारत में इन दिनों में एनएसएसओ ने जो डाटा दिया है उसमें 2 चीज कहा है। मैं इसीलिए नई पीढ़ी के सामने इसको उल्लेख कर रहा हूं, इसकी एक महत्व है। भारत में पहले अपने आबादी में जितने लोग काम करने लायक है, लगभग 90 करोड़ लोग हमारे वहां काम करने की एज ग्रुप में है, 15 से 59 तक। उसमें से 50% लोग काम करते थे। डेवलप्ड इकोनॉमी में उसकी संख्या 75 तक होती है, हमारे वहां 50% काम करते हैं। इसके अर्थ है और कुछ लोग काम कर सकते हैं। इन दिनों में जो एनएसएसओ की डाटा आई है, ये 50% बढ़ के 57% हो गया है, 50% 57% हो गया है। 7% की संख्या बढ़ी है। और उसमें विशेष करके किसकी पार्टिसिपेशन ज्यादा बढ़ी है? वुमेन पार्टिसिपेशन बढ़ी है, महिलाओं की पार्टिसिपेशन बढ़ी है। पहले 100 में से महिला 23 काम करते थे, बाकी 77 पुरुष काम करते थे। अभी महिला 37 काम कर रहे हैं, 14% की ग्रोथ हुई है। मैं मित्रों ये सब कह रहा हूं, इसी को अगर कहेंगे तो इस गाने के साथ भी जुड़ता है, हम होंगे कामयाब। देख लो वाला थोड़ा, में डेमोक्रेसी में मेरा ओपिनियन है, थोड़ा हाथ में रखिए, दिखाएंगे दुनिया को थोड़ा 50 साल के बाद, 25 साल के बाद।
और हमारी दिखाने का तरीका किसी को दादागिरी करना नहीं है। जैसे आज हम 125 देशों में मेडिसिन भेजे थे, खाद्यान्न भेजे थे, दुनिया की सभी गरीबों की चिंता करने का दायित्व भारत की है। इसी की नाम है वसुधैव कुटुंबकम, इसी की नाम है इंडिया मूवमेंट। यही है इंडिया मूवमेंट, ये भारत के मूवमेंट आ चुका है। और उसमें हमारी संभावनाएं कितने हैं, किसकी जिम्मे में है, आने वाले 25 साल में क्या होगा। अब जानते हैं भारत में, अगर मैं एक तथ्य आपके सामने रखूं, भारत में 15 से 29 एज ब्रैकेट में 40 करोड़ लोग हैं, अमेरिका से ज्यादा 40 करोड़ लोग हैं 15 से 29, जिसमें से ये सब लोग हैं, ये सब तो गजब की लोग हैं। इतने ही नहीं, इस आयु वर्ग में सभी लोग गजब के लोग हैं। भारत की आबादी में अगर 35% की, मैं 29 को और 6 साल जोड़ दूं, आबादी के पॉपुलेशन की 60% लोग आ जाते हैं 1 to 35 के अंदर। यही है भारत की डेमोग्राफिक डिविडेंड। और उसमें अगर थोड़ा और एक स्टैटिस्टिक्स में आपके सामने रखूं, पढ़ने की उम्र है 3 to 23। पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति की योजना से, एनईपी की इंप्लीमेंटेशन से आज भारत में सभी बच्चों के लिए पढ़ाई की व्यवस्था की जा रही है। एज 3 से 23 में भारत में 50 करोड़ बच्चे हैं। एनईपी उनको विश्व के लिए ग्लोबल सिटीजनशिप के लिए तैयार कर रहा है। आज हम स्टडी इन इंडिया की प्लेटफॉर्म खोल रहे हैं। खूब जल्दी, खूब शीघ्र हम फॉरेन यूनिवर्सिटियों को भारत में कैंपस खोलने की अनुमति देने वाले हैं। भारत से 10 लाख विद्यार्थी बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए। भारत की एक मोटा मोटा अनुमान में 25 बिलियन यानी 2-2.5 लाख करोड़ रुपया बाहर चले जाते हैं। अच्छा, हमारे वहाँ भी बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं, लेकिन हम ज्ञान की दुनिया को सीमित करके रखना नहीं चाहते हैं। इसीलिए विश्व की अच्छे गुणवत्ता वाली यूनिवर्सिटी भारत में भी आए, भारत की विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर काम करे, इसकी भी हम नीति बना रहे हैं। आज भारत के बच्चे बहुत बड़ा सोचे, थिंक बिग, ड्रीम बिग। हमारे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जी कहे थे, वो सपना ऐसे होनी चाहिए जिसमें रात भर नींद ना आए। ऐसे हमको मेहनत करने की आवश्यकता है। मैं फिर जो इंडिया मूवमेंट आ गया है, देश की उपलब्धि आ गया है, देश की उपलब्धि युवा वर्ग की कंधे पे आज है। ये सफलता आपकी है और आगे की दायित्व भी आपकी है। आज जो 9 साल में है, आने वाले 25 साल में उसकी आयु हो के जाएगा 34। 34 साल में क्या होगा? शायद वो एआई की एक नई परम एकदम अल्टीमेट हो चुका होगा, एआई की और कुछ फॉर्म आ चुका होगा। लेकिन एआई प्लस भारत की व्यवस्था में, भारत की सभ्यता में परमानेंटली एक चीज है, वो है एचआई, ह्यूमन इंटेलिजेंस। भारत कभी अपने को खोता नहीं है। पिछले कई हजार साल से भारत में पढ़ने पढ़ाने की परंपरा रही है। मैं बहुत पुराना ना जाऊं, नालंदा, तक्षशिला, चीन की परिव्राजक तो भारत ही आए थे ना। क्यों आए थे? पढ़ने के लिए। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के गांव में एक यूनिवर्सिटी छोटा मोटा था। उस यूनिवर्सिटी में अभी आर्कियोलॉजिकल सर्वे प्रमाणित करता है, हिंदू, जैन, बौद्ध तीनों शिक्षा प्रणाली वहां दिया जाता था। और उसको देखने के लिए चीन परिव्राजक वेंशा आए थे वहां। केवल वहां नहीं गए थे वेंशा भारत के कई इलाका में गए थे। भारत की ज्ञान परंपरा, भारत एक ज्ञान आधारित समाज है, नॉलेज बेस्ड सोसाइटी है।
और 21st सेंचुरी दुनिया में एक ज्ञान आधारित सभ्यता को दिखता है। और निस्संदेह आज जो सीड्स हम डाल रहे हैं, जो आज जो बीज हम बो रहे हैं आज की प्लेटफॉर्म पे, अनस्टॉपेबल 21, 21वीं सदी में अनस्टॉपेबल 21, ऐसे अनेक 21 होनहार बच्चों को ढूंढ निकालेगा और हम दुनिया की जिम्मेवारी ग्लोबल सिटीजन बनाने वाले राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लाए हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया को फिर मैं धन्यवाद देता हूं और आज की बच्चों को, इस 21 बच्चों के माध्यम से देश की सभी नई पीढ़ी के लोगों को शुभेच्छा देता हूं। आप इंतजार करिए, इंतजार करने की समय जा चुका है, अभी काम करने की समय आया है। हम सब उस काम पे जुड़े, इंडिया मूवमेंट को बरकरार रखें। बहुत धन्यवाद। Thank you so much, Dharmendra Pradhan ji, for this inspiring words. I would like him to stay back on stage as we now invite all the 3 jury members to kindly come on stage as the chief guest will felicitate them. We have Sudha Raghunathan. She's one of India's finest exponent of Carnatic music. Ma'am, can we please have you on stage? Now I would like to call Professor Govindan Rangarajan. He's the director of the Indian Institute of Science. Sir, kindly come on stage, please. Kindly stay on stage. Sir, Professor Govind Rangarajan is the director of the Indian Institute of Science. I would now like to ask Rohan Verma, CEO, Map My India, to kindly come on stage, please, and would ask the Minister to felicitate him as well. Thank you so much. I would request the chief guest and all the jury members to kindly stay back on stage as we begin this felicitation ceremony. And now, everyone, this is now for the unstoppable 21 themselves, all the 21 achievers who will inspire millions more to follow in their footsteps. I would now invite all these unstoppable 21 achievers on stage, one by one in alphabetic order, starting with Arav Anil. He is the winner of over 20 awards in regional and national robotics competition and represents India globally. Can we have more on Arav, please? We have Arav Anil. Can we have a round of applause for him? We
next have Abhijita Gupta. She is the world's youngest writer and she is found mentioned in the International Book of Records. Kindly, we have Abhijita Gupta. And we have more about her. Hello, my name is Abhijita Gupta. I study in grade 5 and I am 10 years old. I am the world's youngest author and I have 3 books to my credit. Can we have a round of applause? Keep clapping. Congratulations, Abhijita. Next we have Aditi Swami. She is represented by her father. She is a gold medal in World Archery Championship 2023. Can we have more about Aditi, please? 17-year-old Swami from India takes this teenage sensation from India to the world title. Please. Next we have Advait Kolarkar. He's the world's youngest professional painter. Can we have more about him, please? Advait, can we have you on stage, please? Can we have a round of applause for him? Next we have Apala Sai Kiran. He's a tech innovator and founder of Scope, a data platform. Can we have more on him, please? We have Sai Kiran on stage. Can we have a huge round of applause for him, for Sai Kiran? Next we have Avani Prashant. She is the first Indian to win the Queen Circuit Cup, the Asia Pacific Amateur Ladies Golf Tournament. Can we have more on Avani, please?
Next we have Ayan Deshpande. He's the prodigious concert pianist and composer and has won the Golden Key Music Festival in Vienna. Can we have more on Ayan? Round of applause for him, please. Next we have Gukesh D. Don't we all know him already? He's the India's #1 chess rank player and is represented by his mother this afternoon. Can we have more on Gukesh? We now have Himesh Chadalavada. He is the inventor of Alpha Monitor, a device to assist Alzheimer's patients. Can we have more on Himesh, please? We now have Karnav Rastogi. He's an author, a speaker at the United Nations Environment Program, and a WWF speaker at the National Youth Summit, and has been awarded internationally. We have more on Karnav now. Now like to invite Lydian Nadaswaram. He's an Indian musician and winner of CBCS, the world's best reality show. More on Lydian now.
Next is Mehul Borad. He is an International Physics Olympiad gold medalist, World 25 in the world, and also a gold medalist in Astronomy and Astrophysics Olympiad. More on Mehul, please. Mehul Borad. Next, we have Namya Joshi. She's an official Minecraft student ambassador, a global teacher, and a national award winner. Can we have more on Namya, please? Congratulations, Namya. Next, we have Nihal Raj. He's a young chef featured in global shows like Ellen DeGeneres, and we'll have more about Nihal now. We have Parth Salunke. He'll be represented by his father. He's the first male Indian archer to win the gold recurve category of the Youth World Championship 2023. We'll know more about Parth in the video. We now have Sharanya Mudundi. She is the Carnatic musician recipient of Global Child Prodigy Award 2022. We have more on Sharanya now.
we have Tulasi Hegde. She's the Yakshagana dancer mentioned in the India Book of Record and International Book of Records. More on Tulasi now. We would now virtually honor the ones, the four who could not make it for this event for various reasons, starting with Haziq Kazi. He has designed a ship model to clean plastics from the ocean and present it at the global forums. I would like to have the video of Haziq. Next, we have Kevalya Vora. He's the co-founder of Zepto, the grocery delivery app, the richest Indian youngster. His video. Next is R. Pragnanda. He's the world's fourth youngest chess grandmaster. And finally, Shefali Verma. She's the Indian cricketer, youngest to play women's international T20 cricket match. I would congratulate each one of you for making to the Unstoppable 21. Now I would ask the chief guest to kindly remain on stage as we officially launch the anthem. We have the photo session after the anthem launch, sir. Just would like to tell you about the anthem now. It's a musical rendition that captures and celebrates the spirit of an unstoppable India, the Unstoppable 21 anthem as we call it. The anthem sees the coming together of a group of brilliant young artists, each with his own exceptional talent, either vocal or instrumental, and collectively they too symbolize an unstoppable India. The anthem was composed by noted Bollywood composer Shantanu Moitra, directed by Parashar Barua, and its lyrics were penned by Tanveer Ghazi. I would now invite noted Bollywood composer Shantanu to kindly come on stage, please. I also call upon Mohit Jain, the COO, BCCL, to kindly felicitate him. Can we have a huge round of applause for Shantanu Moitra, who has composed this anthem. I would now ask Shantanu Moitra to kindly come and talk about the anthem
and the talent behind the song. Honorable Minister, Namaskar. That was a beautiful speech. Times of India Group, congratulations. Unstoppable 21 is a mind-boggling idea. Absolutely amazing. A big round of applause. Absolutely. To all the dignitaries and juries who spotted these pearls and picked them to make this beautiful necklace. And of course, the under 21s. आप लोगों के credentials देखने के बाद मुझे थोड़ा embarrassing लग रहा है यहाँ पे खड़ा होने के लिए, because you guys are really amazing. All of you are outstanding, absolutely. But और आप लोगों को congratulate करने के पहले I must congratulate all your parents and grandparents, because without that support, it's so important to flourish. Quickly, I just want to say about the anthem. जब टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप मेरे पास आई बताने के लिए कि ऐसा हो रहा है, हमें कुछ करना चाहिए, वी शुड क्रिएट एन एंथम एंड अ सॉन्ग, मैं हमेशा व्हेनेवर आई एम इन एनी काइंड ऑफ क्राइसिस ऑफ अ सिचुएशन कि क्या गाना करना चाहिए या क्या कुछ क्रिएट करना चाहिए, व्हाट रूट शुड आई टेक, आई थिंक ऑफ वन मैन. ही इज़ द कॉमन मैन जो टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप ने सृष्टि की है, आर के लक्ष्मण का कॉमन मैन. मैंने कहा ये इंसान होता तो क्या बोलता, मुझे ये बोलता कि यार बहुत दिन से हम गा रहे हैं कि हम होंगे कामयाब. आई थिंक वी हैव डन इनफ थिंग्स. आई थिंक हम हो रहे हैं कामयाब. एक्चुअली द आइडिया केम फ्रॉम आर के लक्ष्मण कॉमन मैन. व्हाट वुड ही हैव टोल्ड मी, एंड आई translated that to Kaustav and said, I think this is a great idea. Let's use the same language and the tune, but एक line just बदल देते हैं. And I must tell you one thing that all the kids out यहाँ पे हैं जो लोग स्टूडियो में आए थे, इनका कॉन्फिडेंस देख के मैं एक्चुअली हिल गया था. बिकॉज व्हेन आई वाज देयर एज, किसी के सामने मुंह खोलने के लिए वी वर लाइक स्टैमरिंग. एंड लुक एट द कॉन्फिडेंस. एंड सम ऑफ देम कांट स्पीक हिंदी, एंड दे वर स्पीकिंग हिंदी, सिंगिंग इन हिंदी. मेमोरीज माइंड ब्लोइंग. माइक्रोफोन पकड़ के ऐसे गा रहे हैं कि पूरा ज़िंदगी का है, 6-7 साल के होंगे. सो इट इज़, लेकिन मैं इतना कुछ सीख रहा हूँ उस कमरे में, जो फुटेज होगा यहाँ पे कहीं पे मेकिंग में, कि मैं बिल्कुल भौचक्का हो गया कि यार ये कौन है, ये लोग कहाँ से आए हैं. दे आर फ्रॉम माई कंट्री, दे आर द फ्यूचर, एंड दे आर इनक्रेडिबल, एंड दे आर इनक्रेडिबल 21. सो आई विल अगेन रिइटरेट कि टैलेंट तो हर जगह होता है, बट मैं दाद देता हूँ कि टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप ने उंगली उठा के दिखाई कि भाई ये बच्चे हैं, इनको कॉन्ग्रेचुलेट किया जाए. ये दिखाना, टॉर्च लाइट दिखाना बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अदरवाइज हम टेकन फॉर ग्रांटेड करते हैं, क्योंकि हम जब बच्चे थे तब कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन में हम लोग को वी वर नेवर इंक्लूडेड कि यार ये तो बच्चे हैं. वी आर द यंगेस्ट populated country in the world. You cannot ignore this youth, and that is what we are doing. Congratulations to everybody. And now, quickly, I'll request Mananiya Mantri to inaugurate this anthem, which I want all of you to share. This has to become a movement, because this is the greatest ideology of our country. Hum Ho Rahe Kamyaab. Thank you so much. हम हो रे कामयाब देख लो. सोनेरी धरती जटे, रंगी रंगीलो रस भरो, मारो प्यारो हिंदुस्तान.
Indeed, hum ho rahe kamyaab dekh lo. Thank you, Shantanu, for this. Can you? Okay. Let me stand corrected. देख लो चलेगा. Thank you so much. Now, I would like to invite all the young artists who have created this wonderful anthem to come on stage. Shantanu, could you also kindly come on stage, please? I would ask all the young artists, one by one, starting with Esther Namte. She's the 7-year-old singer with over 25 awards and citations to her credit. A round of applause for Esther, please. Keep the claps going. She's just a 7-year-old with over 25 awards and citations to her credit. Wow, that's... Can we have a round of applause for Esther? Esther, you can kindly stay back. Next, we have Anirban Roy, a flautist who gave his first public performance when he was just 5 years old. Can we have Anirban, please? A round of applause for Anirban. We have Rahul Velal. He's a classical music singer who has performed in more than 7 countries. Rahul. We now have Stephen Samuel Devasi. He's the fastest child drummer, a child prodigy adept in playing drums and singing. Stephen. Round of applause for him, please. Next, we have Imnanla Jamir, a musician and guitar artist, worked on numerous music projects, including Park's I Care About You music video, which has more than 2 million views on YouTube already. We have Aditya Ravidas, a young artist has recognized him as top 10 in Karnataka and top 20 nationally in the category of Indian classical Carnatic violin. Aditya Ravidas. We have Ayan Deshpande, a 9-year-old piano prodigy. Ayan Deshpande. Just 9 years old. All of them have been part of this incredible anthem, Unstoppable 21. We have now Sartaज Khan Barna, a folk singer, lent his voice to the song Bapu Sehat Ke Liye Tu To Khatarnak Hanikarak Hai from the Hindi feature film Dangal. Finally, Chotu Khan, a very talented 7-year-old Rajasthani folk singer. Huge round of applause for this special. Haven't they done an incredible job in this? All these young artists. Can we have a huge round of applause for Chotu Khan?
Now we'll have a group photo. I would ask the chief guest to we have a group photo with all the anthem artists, Shantanu and the chief guest. Can we have the claps? Keep clapping for this. Now I would invite the jury members as well to kindly come on stage, and for the group photograph, all the 3 jury members, please, if you could just come up. Now I would request a group photo with only the 21 unstoppable winners along with the jury members. I would request the jury members to stay back, and I would ask the unstoppable 21 winners who would now come on stage for the group photo. Can I have all the winners of the Unstoppable 21 to come and for the group photograph along with the 3 jury members and the chief guest? Even as a smile for the photos, can we have a round of applause for each one of them, please? I would like to thank each one of you and congratulate all the Unstoppable 21 finalists. Thank you so much for your patience, for being on stage so long. Kindly have your seat. Now we have a Thank you so much, Dharmendra Pradhan ji. Now we have a set of performances. I would ask the artists to come on stage and perform for us, beginning with Esther and Imnena Jamir, who will be performing Vande Mataram.
can we have Esther and Imnanla Jamir on stage to perform Vande Mataram. All right. We'll have Ayan Deshpande. He'll be performing Edward Grieg's Go Bold. I think Esther is here. All right. So the first performance, Esther Namte and Imnanla Jamir will be performing Vande Mataram. Vande Mataram, Vande Mataram.
तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। Thank you. Absolutely incredible. No wonder she already has 25 awards already. Now we have Stephen Samuel, Aditya Ravidas, and Anirban Roy who will perform Journey, a composition of Dr. L. Subramanian. Stephen, Aditya, and Anirban.
standing ovation, truly deserves a standing ovation. What a performance that was. Thank you so much, Stephen, Aditya, and Anirban, for this amazing performance. Next, we have Ayan Deshpande. He'll be performing Edward Grieg's Kobold. Ayan, can we please have you on stage? While he's on his way. As meant. Over to Ayan. Thank you so much, Ayan. Indeed, a splendid performance. As mentioned earlier, the anthem, the Unstoppable Anthem, was directed by Parashar Barua. The next performance is by Chotu Khan and Sartaz Khan, who will be performing a Rajasthani folk song, Kesariya Balam. Can we have them on stage, please? हेलो, नमस्कार, खमागणी। आप सबका यहाँ पे स्वागत है। और मैं राजस्थान जैसलमेर से हूँ। हमारे राजस्थान में ट्रेडिशनल है कि जब कोई मेहमान आता है तो उसके लिए वेलकम सॉन्ग केसरिया बालम गाते हैं। तो आज आप सब लोग आए, आपका स्वागत है। और आप सबके लिए मैं केसरिया बालम, राजस्थान का ट्रेडिशनल फोक सॉन्ग गाऊँगा। सोनेरी धरती जटे सोनेरी धरती जठे कठे चांदी रो आसमान है रंगे रंगी
रंग रंगीलो रस भरो मारो प्यारो राजस्थान मारो मारो प्यारो हिंदुस्तान ओ केसरिया बालना जोड़ी राडोला आवो नी पधारो सा आवो नी पधारो मारे देश रे आओ जी पधारो मारे देश ओ केसरिया बालम हो जोड़ी राडोला आवो नी पधारो सा आवो जी पधारो मारे देश रे आओ जी पधारो मारे देश ओ साजन साजन मैं करूं ओ साजन साजन मैं करूं ओ साजन जीवजड़ी हो साजन लिखे दूं जोड़ ले साजन लिख दूं जोड़ ले मारे बाजू घड़ी रे घड़ी ओ केसरिया बालम जोड़ी रा ढोला आवो नी पधारो सा आवो नी पधारो मार देश रे आओ जी पधारो मार देश आ गड दिली गडया करो गड दिली गड दिली गडया गिरो ओ गड से बीकानेर है भलो चुनायो भारतीय ओ सिरे जैसलमेर ओ केसरिया बालम आवो नी पधारो सा आवो जी पधारो मारे देश रे आओ नी पधारो मारे देश ओ केसरिया बालम हो जोड़ी ढोला आवो नी पधारो सा आवो नी पधारो मारे देश रे आओ जी पधारो मारे देश मेरे पास एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है खरताल। ये एक लकड़ी के 4 टुकड़े हैं और मैं इसे प्ले करूँगा। पहले मैं प्ले करूँगा, मेरे बाद आप सबको मेरे को फॉलो करना है क्लैपिंग के साथ।
Thank you so much, thank you. Sardas Khan. The final performance is by Stephen Samuel and Rahul Vilal, who will be performing Dhana Shri Thilana. Supporting them is Aditya Ravidas. Can we have all three on stage, please? गीतधुनिकुतकधीं नादृदृततुं नाच रहे गोरी तां दितां तै तिरकतुं गीतधुनिकुतकधीं नादृदृततुं नाच रहे गोरी तां दितां तै तिरकतुं गीतधुनिकुतकधीं नादृदृततुं नाच रहे गोरी तां दितां तै तिरकतुं गीतधुनिकुतकधीं नादृदृततुं नाच रहे गोरी तां दितां तै तिरकतुं गीतधुनिकुतकधीं बाज पायल कहो बाज पायल कहो जनन जनन बाज पायल कहो जनन जनन बाज पायल कहो जनन 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 बाज पायल कहो जनन 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 तुम जनन 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 तुम जनन 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 बाज पायल कहो जनन 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 तुम जनन 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 तुम जनन 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 गीत धुनिकुतकधीं नादृदृततुं
नाच रहे गोरी ताम दितम तैरित तिरगतुम गीत धुनि को तकदी तान गावे तकत तै तै 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 तनन तीम तकिट तगदीम तीम तकिट तगदीम तीम तकिट तगदीम हततोम हतगीत धुनि को तगदीम तै तनन तीम तकिट तगदीम तीम तकिट तगदीम तीम तकिट तगदीम हततोम हतगीत धुनि को तगदीम नाच रहे गोरी ताम नितम तैरित तिरगतुम गीत धुनि को तगदीम पदुमनाभ तुम्हारी लीला पदुमनाभ तुम्हारी लीला पदुमनाभ तुम्हारी लीला क्या कहूँ मैं सावरो पदुमनाभ तुम्हारी लीला क्या कहूँ मैं सावरो ताप संकट शरणायो सो हमारो तुम रो ताप संकट शरणायो सो हमारो तुम रो तदिम धिरना पमगरि तदिम धिरना निरप मगरि तदिम धिरना गैरि सनि दप सानि दप मग तदिम धिरना उदनि तदानि दानि तदिम धिरना धिरना उदनि तदानि दानि तदिम धिरना तादित्तों तकदगदरि तदागतन दारिदि अलरि कलरि तगत दादानि तगत दादानि तगत दादानि दीम तनि अलरि ताम ताम ता तगतनि अलरि तोम 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 तगतनि अलरि गीत धुनि को तदिम धिरना उदनि तदानि दानि तदिम धिरना तादित्तों तकदगदरि तदागतन दारिदि अलरि कलरि तगत दादानि तगत दादानि तगत दादानि दीम तनि अलरि ताम ताम ता तगतनि अलरि तोम 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 तगतनि अलरि गीत धुनि को तगदीम नद्रेन्द्र तुम नाच रहे गोरी ताम नितम तैरित तिरगतुम ताम नितम तैरित तिरगतुम ताम नितम तैरित तिरगतुम गीत धुनि को तगदीम धुनि को तगदीम धुनि को तगदीम Can we have
Standing ovation for Stephen, Rahul, and Aditya. Thank you What so a much. splendid performance. A huge round of applause for them. I want to thank each one of the artists who's performed for us this evening, whose performances have indeed left us spellbound. Now I would like to request Vikas Singh, Executive Editor, The Times of India, to give a note of thanks. And as he comes up, one of the Unstoppable 21, Tulsi Hegde, has something to share with the Times of India team. I would ask Tulsi to kindly come up on stage. Wow, too much awesomeness. I think mind is officially blown. This has just been a riveting ceremony, and I'm sure that nobody really wants to see it end. But some of us do have a paper to bring out so that we can capture everything that's happened today for the larger world out there. So, on behalf of the Times of India family, it is my pleasure and my privilege to thank the Hon'ble Minister. Sir, your gracious presence and inspirational words will, I'm sure, motivate all our young achievers to redouble their efforts. I'd like to give a big thank you to all our jury members for so generously giving us the gift of their hard-earned wisdom and experience and insight. And a special thank you for the jury members who are here. I think, they're worth a little more. Congratulations, heartiest congratulations to our winners and their proud families. All of you have a beautiful journey ahead of you, and the Times of India, in fact all of India, will be cheering you every step of the way. Shantanu, everyone who collaborated on this anthem, all the performers who have helped create this energetic and inspiring anthem, heartfelt gratitude. Shantanu also did the Tiger anthem, which you might have seen, which has touched so many hearts, and I'm sure this one is also a winner that will resonate not just across the country, but across the world. And finally, having witnessed the achievements of our young winners, having watched the passion and the desire to excel of all our performers, I think we can safely conclude that these are indeed the Times of India, unstoppable India. Thank you. Thank you, Vikas. I would like to thank each one of you for being such a wonderful audience this afternoon, and especially congratulate all the 21 winners this year's edition, Unstoppable 21. And would request all of you to kindly join us for lunch in the lawn area. I would ask the Unstoppable 21 winners to kindly stay back in the auditorium, and the rest, we warmly welcome you and thank you, and kindly join us for the lunch in the lawn area. Thank you so much. हम हो रे कामयाब देख लो सोनेरी धरती जटे
रंगी रंगीलो रस भरो मारो प्यारो